संताप व्यक्त केलेला आहे। या घटनेकडे आपले लक्ष असेलच, मात्र भिवंडीमधून पुढची बातमी येते। भिवंडीमध्ये मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळते। भिवंडीच्या घुंगर नगर परिसरात घरांमध्ये पाणी शिरलंय। गुडघाभर पाण्यात राहण्याची वेळ इथल्या रहिवाशांवर आली आहे। या परिसरातून आढावा घेतलेला आहे आमच्या प्रतिनिधींनी, आपण पाहूयात। भिवंडी शहर तसेच ग्रामीण भागाला काल मुसळधार पावसाने झोडपलेले होते आणि सकाळपासून पावसाने उसंती घेतलेली होती, परंतु आता आपण जर पाहिलं तर मुसळधार पावसाला या ठिकाणी पुन्हा सुरुवात झालेली आहे। भिवंडी शहरातील या ठिकाणी हा घुंगट नगर परिसर आपण पाहू शकतो आणि या ठिकाणी गुडघाभर या ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे। काल या ठिकाणची परिस्थिती अशी होती की जवळपास या ठिकाणी 2 ते 3 फुटांपर्यंत पाणी साचलेलं होतं। अनेक घरांमध्ये, दुकानांमध्ये या ठिकाणी पाणी शिरलेलं होतं आणि आताही या ठिकाणी या पाण्याचा निचरा झालेला नाहीये। आपण बघू शकतो की या ठिकाणी हा किराणा दुकान या ठिकाणी पाहू शकतो। किराणा दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पाणी शिरलेलं आहे। क्या सांगाल, क्या कहेंगे आप जी, कब से पानी भरा है आपके घर के अंदर? हमारे घर के अंदर 1 हफ्ता से पानी भरा, हम लोग इसी में रह रहे हैं और ऐसे पानी निकल ही नहीं रहा है। इसी में रह रहे हैं, कहाँ जाऊँ। घर ऊपर रहने के लिए 2 दिन से पड़ोसी को बोली तो वहाँ सो रही हूँ, रह रही हूँ और पानी निकल ही नहीं रहा है। इतना निकाली तब भी नहीं निकला, परेशान हम लोग हो गए। पूरा पानी निकल ही नहीं रहा है। घर के सामान को क्या कर रहे हैं? घर का सामान ऊपर अपने उधर बगल वाले के ऊपर शिफ्ट करे हैं और तो बह गया कितना मेरा सामान। रात दिन चिंता लगा रहता है कि दीवार वाल कहीं वो ना हो जाए क्रेक, और कुछ नहीं। क्या बताऊं, आप खुद ही देख रहे हो और मैं क्या बताऊं। घर का पूरा सामान सब ऊपर रखे और इधर है और बह गया। आज 4 दिन से ऐसी यही हाल है भैया, और क्या बताऊं। महानगरपालिकेच्या कार्यालयापासून काही अंतरावरती आहे आणि तरी देखील महानगरपालिकेचे आपत्कालीन व्यवस्था या ठिकाणी ढुंकून देखील पाहिलेला नाहीये। अनिल वर्मा, एबीपी माझा, भिवंडी। या बातम्यांसोबतच बुलेटिनमध्ये एक ब्रेक घेतोय, पाहत रहा एबीपी माझा।